आप ये आदेश को क्यों नहीं माने थे? हाँ सर, समझने में त्रुटि हो गया सर, समझ नहीं पाया था मैं आदेश को। आप यदि ऑफिसर होकर नहीं समझ पाएंगे तो कौन समझेगा? सर समझ आता हूँ सर, गलती हो गई। 15 डेज का आपको रेस्ट दे देते हैं, फिर जेल में कर दे। नहीं, इतने दूर से आ रहे हैं, बता रहे हैं ना आप तकलीफ में है, तो 15 दिन यहाँ रेस्ट कीजिए, बिलासपुर आए तो। गलती होगी सर, समझ नहीं, गलती होगी, गलती हमसे माफी की कुछ नहीं है, इट्स ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपको यहीं रेस्ट करवा देते हैं कुछ दिन, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, 15 दिन बाद जाइए। कपड़े वगैरह लाए हैं? नहीं लाए? बुलवा लीजिए कपड़े, ऑर्डर कर देते हैं। What was the case? Case was that my lord, the order of status quo was granted by this honorable court. We produced the order sheet before the Tahsildar, and he said that since there is no interim stay granted, therefore the proceeding of the possession shall be continued. Now he is filing this affidavit saying that he is not able to understand due to the lack of, clear it, my lord. Earlier also in my reply, I had very clearly apologized for my behavior, my lord. It is not that first time I am praying for the mercy of the court, my lord. आपके उसमें डिक्री क्या था? डिक्री था क्या? 170 का मामला था that traveled up to High Court, my lord. In that, in 2016, my Honorable Court has directed to maintain status quo to the parties, my lord. And in 2019, the respondent number 2 made an application before the collector. Collector marked it to SDO and SDO marked it to me, directing त्वरित कार्यवाही करें करके. That proceedings were started. In that they came up with the order dated 5/7/2019, which was extension of the interim order, my lord. And later on the unfortunate date, they 15/3 को है, 13/3 को 13/3/2019 they produced the order of the Honorable Court dated 19/7/2016, in which status quo was granted, and in that due to some language problem and I being a promotee from Patwari, I mentioned that there is no stay and I proceeded further, my lord. That is the case in the Have nutshell. you purged the effect of that purging? Have you done it? My lord, supposing if you have proceeded in the revenue case and you have done the damage to the parties, who was the beneficiary of holding a stay? my lord. Okay. Status quo. Status quo, whatever may be. My lord. So have you purged that? Was ultimately effect of what? After that, my lord, Honorable Court has totally stayed the proceedings. I again filed an application And before in this that, honorable court, which was pending, and then again this order of stay was granted by this honorable court. In that, my lord, I brought the whole in the notice of proceedings this honorable were court then that stayed. despite the status quo order, ये they दो एफिडेविट क्यों है? दो केसेस. दो केसेस, 3 और 4, my lord, दोनों arising out of the same transaction. Have you gone through this apology? But he has only stated that since due to the lack of in English language, he could not understand. It is one of the, but in one of the most sincere efforts, my lord, again I am apologizing. And Now presently what is the position? It You are is- not affected by this? No, subsequently that proceeding was stayed by him when I ठीक है, कर produced. देते, फिर काहे को इसको पेंडिंग? That is the additional affidavit filed by the contender. Wherein it has been stated that since the applicant, the contender was not well versed with the English language as such, there was a confusion to interpret the order, and subsequently the entirety, the proceeding in the revenue case has been stayed. Unconditional counsel for the contender is present. Who is the contender?
आप ये आदेश को क्यों नहीं माने थे? हाँ, सर समझने में त्रुटि हो गया सर, समझ नहीं पाया था मैं आदेश को। आप यदि ऑफिसर होके नहीं समझ पाएंगे तो कौन समझेगा? सर समझ चाहता हूँ सर, गलती हो गई। ये हमसे नहीं, वो जो पार्टी है वो तो इफेक्ट हो जाते हैं ना, फिर हाई कोर्ट आओ दौड़ो। कहां से आते हैं आपके पार्टी? Bakawan. Jagdalpur, near by Jagdal. इज इट इजी? He is also facing ordeal because of that. He is coming from Konta It's hardly because of his. no, we can place him. error committed by- We can place him here also. 1 month imprisonment अभी कर देंगे तो उतना दौड़ भाग नहीं रहेगा, यहीं यहाँ जेल में रहेंगे आराम से। Definitely. उसकी कोई तकलीफ, उतने दूर से आ रहे तो 1 महीना रेस्ट भी दिला सकते हैं बाय द जुडिशियल ऑर्डर, या Definitely. 15 दिन का, He is repentant. 15 डेज का आपको रेस्ट दे देते हैं, फिर जेल में कर दे। इतने दूर से आ रहे हैं, बता रहे हैं ना आप, तकलीफ में है तो 15 दिन यहाँ रेस्ट कीजिए, बिलासपुर आए तो। गलती होगी सर, समझ नहीं, गलती होगी, गलती हमसे माफी की कुछ नहीं है। इट्स अ ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट एंड द पार्टीज हु सफर दिस रेवेन्यू, वहां से जगदलपुर से फिर दौड़ के वकील साहब, वो तकलीफ तो समझिए। अब कोंटा से आ रहे ये तकलीफ है बता रहे, तो आपको यहीं रेस्ट करवा देते हैं कुछ दिन, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। 15 दिन बाद जाइए। कपड़े वगैरह लाए हैं? नहीं लाए? बुलवा लीजिए कपड़े, ऑर्डर कर देते हैं। कांट बी, इट इज नॉट सो इजी। हंसी मजाक में ही ऑर्डर हो जाता है, उसी में हंसी मजाक में चल दीजिए। आप जैसे हंसी मजाक में पार्टीज को, कोई लिटिगेंट को या पार्टीज को जो आपके सामने आते हैं कीड़े मकोड़े समझते हैं, तो समझिए आप, नॉट सो इजी। यार नहीं मानते हम हाईकोर्ट के ऑर्डर को, मत मानिए। हमको जो ऑर्डर पास करना है हम कर देंगे। But he is repenting. हाँ, He is repenting, my lord. आप जब पटवारी थे ऐसे ही करते थे क्या? नहीं सर। कोर्ट का ऑर्डर देखा जाएगा, लेते रहो, हम तो कर दिए। आप इनको एपोलॉजी इनको भी दीजिए एक, सेंड एपोलॉजी टू दी पार्टीज। Will. My lord, definitely. नहीं In होगा तो person. विल रिवाइव इट। My lord. अभी तो इसको ठीक है कर देते हैं, My lord. ऑन अ कंडीशन की एक एपोलॉजी लेटर, इनको भी गलती हो गई हमसे, जी। दे विल होल्ड इट, फ्रेम करके रखेंगे। दैट हैज टू बी समथिंग द रेड लाइन हैज टू बी ड्रॉन समवेयर। My lord. Definitely. Somewhere you have to draw a red line. My lord. Will tender apology within the time stipulated by the court, my lord.